Yes, we ready? Start. Clause 1 and 3 deal with export of goods. Stop. Clause 2 deal with the import of goods. Stop. In the present case, we are only concerned with the export. Stop. Thus, clause 2 is not relevant. Stop. Clause 1 cover the purchase of goods which occasions the export. Stop. In other words, the sale by the exporter or the purchase by the foreign buyer is covered. Stop. Clause 3 deals with the sale or purchase preceding the export. Stop. In other words, the purchase by the exporter is fictionally treated as being in the course of export. Stop. What is the position in the present case? Stop. The petitioner is a miller. Stop. It buys paddy from the commission agent for milling. Stop. Having processed it, the petitioner sells rice to the exporter. Stop. Then the exporter sells the rice to the foreign buyer. Stop. Clause 1 exempts the sale by the exporter to the foreign buyer. Stop. Clause 3, which was introduced in the year 1976, exempts the penalty made sale which occasions the export, with the sale of rice by the miller to the exporter or the purchase by the exporter from the miller. Stop. However, the sale of paddy by the commission agent to the petitioner is not covered by any of the provisions of Section 5. Mr. Serene contended that such an interpretation would completely defeat the object of the Parliament in introducing clause in Section 15. Stop. Is it so? Stop. On August 17, 1995, a full bench of the High Court decided the case of United Rice Land Limited and another with the state of Haryana and others supra. Stop. It was inter alia held that paddy and rice are declared goods under Section 14 of the Central Sales Tax Act 1956. Stop. These are two different commodities subject to tax under Section 6. Read with Section 15 and 17 of the Haryana General Sales Tax Act 1973. Stop. Thus, dealers were held liable to pay purchase tax on paddy which is dehusked and exported out of India as rice. Stop. It deserves notice that the petitioners with stop United Rice Land and other were admittedly exporters of rice outside India. Stop. They purchased paddy from the states of Punjab and Haryana for the purposes of dehusking it for export of the rice outside India. Thus, they were held liable to pay purchase tax on paddy. Stop. The result was that on account of paddy and rice being
two different commodities. Even the exporter of rice was liable to pay tax on the purchase of paddy stock. In other words, it got no benefit under Section 5(3) of the Central Act. Stop. To alleviate this hardship, the Parliament introduced clause and provided that for the transaction covered by clause 3, paddy and rice shall be treated as a single commodity stock, nothing more stock. As a result, a miller who purchases paddy and sells rice to the foreign buyer is exempted from payment of purchases tax stock. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शंस आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट की हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।